All right, so hi guys, a very warm welcome everyone joining us here at BYJU'S Exam Prep. बहुत बहुत स्वागत, welcome. I can see Tamanna has already joined us. Hi Tamanna, hi Harsh. बहुत बहुत स्वागत आपका. Welcome. Hi Om. Very good evening to you as well. We will definitely do a session on the same buddy, surely Om. Hi Priya. Welcome guys, welcome. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. So I'm sure guys all of you would be really excited for this session. Harshni, hi Harshni, welcome, good evening lovely. उपाध्याय बहुत बहुत स्वागत आपका भी. तो guys the one stop destination for all your CLAT related queries is here. CLAT का बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं, क्या है ये एग्जाम, क्या करना चाहिए हमें, पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर से क्या क्या समझ में आया है हमें, all these things, everything that is important with respect to the exam, we will be talking about them today here in this class. So welcome everyone. Do share this session with all your friends so that everyone join us real soon. Hi Satyam, hi. All about law, welcome. Hi Vaibhav, Devanshu, Sri Raghav, welcome. Hi Nisha, Prachi, good evening guys, good evening. बहुत बहुत स्वागत. आज मैराथन नहीं है यार, आज मैराथन है क्लैट का. ठीक है, क्लैट के बारे में जानेंगे हम बहुत सारी चीजें. क्लैट के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स क्विकली बिगिन विद द सेशन. गाइस सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेवलपमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. गाइस दोज ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2022, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. गाइस वी started a new session, new batch for all of you. You can see CLAT 2022 batch 2 is here. Free trial for the same is going on. Guys, this batch is only for, there for your current affairs and for your legal affairs. सिर्फ legal और current affairs की preparation करेंगे इस batch में हम. If you are someone who's just looking to prepare for 50% of your syllabus, आपको लग रहा है English, RC जो है और CR जो है और मैथ्स खुद से कर लेंगे, लीगल और करंट अफेयर में जरूरत है, या फिर आप पिछले साल पढ़ चुके हो और आपको रिवीजन की जरूरत है, गाइस दिस इज डेफिनेटली द बैच फॉर यू. मस्ट अटेंड. काफी डिमांड हुई थी आपकी इस बैच के लिए एंड हेंस हम यहाँ पे ये आपके लिए बैच लेकर आए हैं. सर आई नीड गाइडेंस फ्रॉम यू. बेटा डेफिनेटली दिस इज द बैच. बिल्कुल गाइडेंस ही गाइडेंस मिलेगी आपको यहाँ पे, है ना. चलिए अब गाइस all about CLAT. This session, let's quickly begin. We all know the date for the exam for the year 2022 will be 8th May 2022. The date for 2023 will be 18th December. I'm sure all of you already know this by now. अभी तक सभी को पता चल गया होगा. ये 2023 का जो एग्जाम है दोस्तों, उसकी जो डेट है, जस्ट अ सेकेंड, CLAT 2023 की जो डेट है वो है 18th December 2022. For the first time, the exam will happen in the month of December, and that is for the year 2023 aspirants, right? तो आप सबके लिए है ये दोस्तों. Application window 1st January to 31st March. We all know this, right? चलिए, please make a video on history of for ALECT. डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली स्टैटिक जीके समझ गया आपकी बात. चलिए तो गाइस सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. Identification of syllabus. So guys, obviously, when we talk about CLAT centric syllabus, lots of, ग्रे एरिया इज देयर, राइट. एज ऑफ नाउ बहुत सारा ग्रे एरिया है. हमें समझ में नहीं आता यार क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट शुड वी स्टडी, व्हाट शुडंट वी स्टडी. सो गाइस वेरी सिंपल, हाउ कैन वी नो अबाउट दिस? ऑब्वियसली फर्स्ट विजिट द ऑफिशियल CLAT वेबसाइट एंड सेकेंडली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द CLAT एग्जाम, राइट. अगर आप वो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपको आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी एनीथिंग रैंडमली, है ना. उठा के आप मैथ्स, आपने सुना मैथ्स करेंगे जी, आज से मैथ्स करेंगे और मैथ्स कर क्या रहे हो आप मैथ्स में? यू आर डूइंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम, राइट. सो वी शुड डू ओनली थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम्स, राइट. नाउ for going through the entire syllabus, obviously the syllabus is just like an ocean, है ना. never ending the syllabus is, इतना ज्यादा है. खासकर अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर ले,
एंडिंग, राइट? तो अभी से लेकर हम लगातार रोज पढ़ते भी रहे तो भी करंट अफेयर का शायद खत्म ना हो। तो हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? वी शुड बी स्मार्ट एट एलिमिनेटिंग थिंग्स, राइट? वी शुड प्रॉपरली हैव जहां पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, मैं एम चार्ट कहूंगा। एम चार्ट एंड टाइम टेबल थोड़ा सा अंतर है। क्या है एम चार्ट? वॉट एवर एम यू हैव फॉर every day, right? Write it on a piece of paper and make sure you achieve it. You can study in the morning, afternoon, evening, night, whenever you want, right? आधी रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पढ़िए जरूर, राइट? और ये एम बनाइए, अपना एम चार्ट बनाइए और उस एम को पूरा करना है। whatever is needed to fulfill that aim, do it. Start with the easy topics so that it brings confidence to solve difficult areas at a later stage. Revising subjects on a daily basis would certainly pull the rank above, right? रोज अगर रिवीजन करोगे आपको बहुत हेल्प करेगा। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। रिवीजन इज एब्सोल्युटली सुपर डुपर एसेंशियल। आई विल रेकमेंड द 1-1-1 रूल फॉर रिवीजन। रिवाइज टुडे, रिवाइज टुमारो एंड रिवाइज 1 week later. Follow this and you are pretty much sorted, right? Identify your weak areas and dedicate complete practice, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सके रेगुलर बेसिस पे उतना कीजिए, राइट? अब इसके साथ ही दोस्तों, दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर द एंटायर क्लैट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द previous papers we saw. आपने देखा, if we talk about section wise, right? English language, this comprehension passages, right? Vocabulary based questions, grammar, idioms, phrases, reading comprehensions based on current affair editorials, current news editorials, right? So अगर आप देखेंगे editorials, newspapers की अगर हम बात करें, right? Newspapers are important not just for your general awareness but also for your English, also for your logical reasoning, and also for your legal as well, right? So all these sections, newspapers will be a great add-on, right? So you can see here the articles can be comprehension passages. There will be 5 to 6 passages in English language, right? From fiction, non-fiction writing, ये सब जगहों से होगा। Logical reasoning passages will be there, editorials, ये देख सकते हो आप, conclusions, cause and effect, reasoning, statements and assumptions, arguments, etc. All these will be there in logical reasoning. So again, guys, so many passages we are supposed to tackle. 30 passages there were last year, 20,000 words were there. How are we supposed to complete the entire syllabus? बहुत ही जबरदस्त syllabus है जी, बहुत बड़ा syllabus है। हम देख रहे हैं यहाँ पे legal reasoning passages, current affairs से है, current legal affairs, legal maxims, legal landmarks, judgment, Supreme Court judgments, all these come under legal reasoning. Current affairs, guys, मैं क्या बोलूं current affairs के बारे में, जितना बोले उतना कम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे detailed topics are written, but this is not an exhaustive list. इसके अलावा भी there are truckloads of other things as well. Then quantitative techniques is there, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भी mentioned हैं। So guys, so many things here, right, with respect to our syllabus. Good part is that even for maths or any such other subject also, the difficulty level again remains doable, right? Sir, my weak point is CR and how can I improve it? सबसे पहले CR के लिए बेटा practice is the key. The more you practice, the better you will get, Tamanna. And I will recommend you to watch KD Sir's classes regularly. He conducts amazing videos here on our YouTube channel. जरूर देखिए उनको, बहुत ही शानदार आपको हेल्प मिलेगी वहां से। And also Alpa Ma'am's classes for your vocab and reading comprehensions. ये सब में हेल्प मिलेगी, ये सारी क्लासेस जब आप लगाओगे रेगुलर बेसिस पे। नाउ गाइस, क्लैट 2022 का पैटर्न अगर हम देखें तो वी ऑल नो द पैटर्न नाउ। 150 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज अ मार्क, 2 hours एंड वी आर सपोज्ड टू रीड सो मेनी थिंग्स, राइट? इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है 2 घंटे के अंदर अंदर, और +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। गाइस, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है, राइट, और आपने गलती से आपको पता था इसका आंसर ए है, आपने बी मार्क कर दिया, और गलती से आपका वो गलत हो गया क्वेश्चन, आपको कितना नुकसान होगा? इट इज नॉट जस्ट -1, एक्चुअली आपको नुकसान होगा -1.25 का। कैसे होगा -1.25 का नुकसान? हाउ विल यू हैव अ पेनल्टी ऑफ -1.25? एक्सप्लेन इन द कमेंट्स, गाइस, एक्सप्लेन दिस in the comments. I will be waiting for your answers, for your question, for your for your solutions basically, right? If I'll repeat the question, if you were
let's say you knew the answer is A, but for some reason you ended up marking B. All right. Your negative marking will not be just, you will not be suffering -1 marks as a loss, but you will be suffering -1.25 in the end result. How am I saying this? What is the reason for this? Do mention in the comments. I'd like to see how many of you have understood this. वेरी गुड श्री राघव, एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड जॉब. तो गाइस यार यही तो है ना खेल. आप कितना भी पढ़ाई में डूब जाओ, राइट, यू बी लाइक दिस गर्ल हु इज सिटिंग हियर विद ऑल द बुक्स, यू जस्ट ड्राउन योरसेल्फ इन स्टडीज. दैट इज नॉट सफिशिएंट, इट विल नॉट सफाइस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज practice, right? Practice is the key. The more you practice, the better you will get. The practice is what is required. It's not just about mugging up things, but it is about doing questions, right? Do as many questions as possible. The more questions you do, the better you will get, right? Ye hai ji simple khel. Now guys, what are the learnings from the year 2021? राइट, चलिए पता करते हैं. गिल्ट ऑफ लूजिंग नोइंग आंसर्स इज एब्सोल्युटली बहुत दुखदाई होता है. आदित्य, एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 mark we lose because okay, yes, 1.25. आपको कमेंट्स में बताना है दोस्तों, ठीक है. Very good, very good. I can see lots of correct answers. Hi Manas, welcome buddy, welcome. Now guys, learnings from the year 2021. We know the exam structure for the year 2021. 30 questions for English, legal 40, logical 30, quantitative techniques 15, and current affairs there were 35 questions, right? So we know total 150 questions were there. Look at the number of passages. That is something which we have to look at. 6 passages in English, 7 at current affairs, 8 in legal, 6 in logical, 3 in quantitative techniques, and 30 passages in total. And we were supposed to read all of these passages. If you take 5 minutes in reading one passage of English, right, 5 minutes for one passage, you end up consuming 30 minutes in just reading the passages alone. 30 मिनट सिर्फ पैसेज पढ़ने में इंग्लिश में, राइट. और उसके बाद यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन एज वेल, यू आर सपोज टू रीड द एमसीक्यूज एज वेल. आप ऑप्शंस भी पढ़ोगे आप, है ना. तो ये सब क्वेश्चन और ये सब पढ़ोगे तो क्या होगा जी, 45 मिनट्स तो एक सेक्शन में लग जाएंगे. 30, अगर आप 7 पैसेजेस करंट अफेयर्स के पढ़ने बैठ गए तो क्या टाइम लग जाएगा आपको. लीगल के पढ़ोगे इतना, मतलब सोचिए आपकी, जस्ट इमेजिन कितना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. रीडिंग की आपके पास स्पीड कितनी ज्यादा होनी चाहिए इन केस यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस. मैक्सिमम क्वेश्चंस, अगर आपके अटेम्प्ट्स 130 के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों, यू हैव टू बकल अप. 130 पे अटेम्प्ट्स नहीं है आपके, तो फिर आप भाई, आपको इट इज हाई टाइम यू रियलाइज कि टॉप 5 एनएलयूज में जाने के लिए मुझे अपने अटेम्प्ट्स जो है 130s में लाने पड़ेंगे. ये मेरा एंड रिजल्ट है, एंड एम है. दिस इज माय एम, राइट. इस एम को पाने के लिए whatever needs to be done, you have to do it, right? To achieve this aim of yours, 130 attempts, क्या करना चाहिए? अभी से प्लान करना पड़ेगा हमें. We have to plan right now, right? सबसे पहला लेसन, सबसे पहला, you can see it did not check your preparation for the exam, it just merely checked your reading speed, right? Reading habit, regular reading करते हो क्या? अगर आप करते हो, you are almost through. This was the first learning from the year 2021. Second, the old mathematics is still relevant, right? जो चीजें, बस the question structure is different. Passage based question is there now, right? But you know, the basic calculations and everything remain the same. The topics remain the same. 10 तक की mathematics, the difficulty level is also the same. Guys, मैं देख रहा हूँ, number of people watching us live is more than the number of likes. Quickly change this around. The number of likes should be more than the number of people watching, है ना. जल्दी से लाइक का बटन दबाओ यार, कंजूसी किस बात की. Guys, vocab is needed not only in the direct questions but also to make sure कि smooth reading experience हो. कोई भी section में आप पढ़ रहे हो, सब में reading involved है. So if you are not good at vocab, आपको समझ में नहीं आ रहा शब्द क्या लिखे हुए हैं, तो दिक्कत ही दिक्कत है हमें. And lastly guys, more than half the test, ये देख सकते हो आप, was based on only reading comprehensions. So having a great command over reading comprehension is absolutely a must. I've already reiterated this multiple times guys. What do you need to do? Practice 2 to 3 reading comprehensions
on a daily basis, right? This is what I would definitely recommend. 2 to 3 RCs on a daily basis you should be practicing, right? The sources for the same, obviously BYJU'S Exam Prep provides you with truckloads of sources. You can do it from there. And last guys, you can see here, superficial cramming of facts may not be a good idea. सिर्फ आपने रट्टा 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 सिर्फ ये चीजें करी, ये काफी नहीं होगा. What else guys? What else? In the new format, cracking the exam is tough, but it is not impossible. Anyone who cracks it requires months and months of experience in terms of reading, right? बहुत effort चाहिएगा आपको, expert guidance चाहिएगी. Good command over reading is absolutely a must. If you're someone who's just starting, you need to buckle up. You need to work on your reading skills for the reasons mentioned here. Current affairs and legal guys, ये बहुत important है. बहुत इनका क्लोज लिंक है. करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, लीगल की ऑटोमेटिकली हो रही है. लीगल की कंसेप्ट्स जो हैं आपको वो समझना जरूरी है. टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टी, राइट? उसके अलावा बेसिक नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए अबाउट सर्टेन लॉज, राइट? हेंस अटेंडिंग द क्लासेस आर एब्सोल्युटली अ मस्ट. Guys, English language and logical reasoning similarities. Let's look at the similarities now. Number one, you cannot differentiate between reading comprehension and logical reasoning. If I remove the heading right from the paper, you'll not be able to differentiate between reading comprehensions and logical reasoning, right? Hence, what does it mean? When you're preparing for reading comprehensions, when you're preparing for critical reasoning, you're actually preparing for both the subjects. Guys, legal और current affair linked है, reading comprehension और logical reasoning linked है, maths अलग सा है. तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो समझो सारे sections की तैयारी हो रही है, बहुत multiple sections की तैयारी हो रही है when you're preparing for all the subjects, right? Must have deeper insights into understanding arguments and deductive reasoning. KD sir के videos super powerful videos हैं, देखते रहिए उनको, right? He comes up with exceptional videos, guys. आज भी RC के ऊपर इतने शानदार वीडियो आया, तो देखिए उनकी वीडियोस को, लगातार देखते रहिए, RCs इंप्रूव कीजिए, right? In English RC, obviously it involves good understanding of vocabulary as well as grammar. तो ये सब चीजें आई एम श्योर लगातार आप अल्पा मैम की क्लासेस भी लगातार देख रहे हैं, सर की भी क्लासेस देख रहे हैं. अगर इतना कर रहे हैं आप, you are pretty much sorted. Now guys, some tips for admissions. अगर आपको एडमिशन चाहिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो क्या कुछ टिप्स हैं आपके लिए? सबसे पहला, the first tip is daily practice questions. Right? Daily practice questions. You should be practicing on a daily basis, especially between 3 to 5 p.m. Please pardon me for my handwriting. Father is a doctor. You all know this by now. उन्हीं पे बिल फाड़ते हैं. चलिए, first daily practice questions. Second, practice between 3 to 5 p.m. Do not sleep during this time. Do not sleep during this time. Why guys? Why you should not sleep during 3 to 5 p.m? Share the reason with me. आप बताइए क्यों नहीं सोना है आपको 3 to 5 p.m के बीच में. 4, enroll in multiple mock test series. Enroll in multiple mock test series, right? अगर आपने बायजूस एग्जाम प्रेप की सीरीज अभी तक नहीं ली है, quickly enroll and obtain your mock test series. Guys, mock tests are absolutely pure gold. जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको. Practice in the form of tests. Practice in form of tests, right? And when you practice here at BYJU'S Exam Prep, तब आपको फायदा क्या मिलता है? कट ऑफ्स मिलती हैं आपको, राइट? कट ऑफ्स मिलती हैं, कट ऑफ्स के साथ आपको रैंक्स मिलती हैं. ये सब बेनिफिट्स हैं आपको. ऑल इंडिया रैंक पता चलती है, हाउ आर योर पीयर्स डूइंग, ये भी आपको आइडिया लगता है. गुड इवनिंग ज्योति, वेलकम. सर मेरे 110 से 20 अटेम्प्ट्स हैं. वेरी गुड. मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे. तो गाइस ये भी मैं बता देता हूं आपको बिल्कुल, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स. मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें, राइट? मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें ये भी मैं बता देता हूं अभी आपको. चलिए ये बता दूंगा मैं आपको. CLAT will be held between 3 to 5 p.m. Absolutely correct. Well done guys. CLAT will be there between 3 to 5. Very good, very good. Good job Prachi and everyone. Good job. Yes, अगर आप सो गए इस टाइम पे तो एग्जाम में भी सो जाओगे. ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. We cannot afford it. Right? Practice in the form of tests. Next, guys, is to have a proper aim chart. Right?
What is your aim daily, weekly, and monthly? Right? Have targets, achieve them, and whenever you achieve your daily and weekly targets, reward yourself. Right? And the most important point here is to analyze your mocks. Right? Analyze your mocks. The more mocks you give, the better it is. Right? Analyze your mocks or your tests. राइट, वेयर हैव यू गॉन रॉन्ग, क्या चीजें आप वापस इंप्रूव कर सकते हो, वो सब चीजें आपको यहां पे लिखनी है. गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन द मॉक्स, फॉर स्टार्टर्स आइडेंटिफाई 3 स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस. स्ट्रॉन्गेस्ट से मेरा मतलब है स्कोरिंग. राइट, आइडेंटिफाई 3 स्ट्रॉन्गेस्ट और स्कोरिंग सेक्शंस. And in the next 1 month, work on your strengths. Make them super duper strong. आपकी जो strengths हैं उन पे वर्क कीजिए, उनको super duper strong बना दीजिए, इतना strong बना दीजिए कि nobody could come near you. Right? कोई भी टच ना कर सके आपको, इतना strong आपको बनाना है. Right? Rupak, yes sir, I would recommend you multiple mock test series. Yes, BYJU'S Exam Prep test series will be a great help to you buddy. बिल्कुल ठीक है जी. यस, सेल्फ स्टडी कर रहे हो ज्योति तो भी आपको जरूरत है बेटा, आपको मॉक टेस्ट की तो जरूरत पड़ेगी. यू विल नीड मॉक टेस्ट. राइट, आई कैन सी गाइस द नंबर ऑफ पीपल वाचिंग अस लाइव इज मोर देन द नंबर ऑफ लाइक्स. दैट कैन नॉट बी द केस. जल्दी से इसको चेंज कीजिए फटाफट से. राइट, नेक्स्ट गाइस, after 1 month, right, when February starts, when February comes, then you should start focus on weakness or gray areas. Weak or gray areas, तब weak और gray areas पे focus कीजिए. Do this and your mocks, scores in your mocks will definitely increase. Right, ये करना है आपको. और mocks का score से ज्यादा जरूरी होता है कट ऑफ्स क्लियर किया कि नहीं किया. राइट, तो कट ऑफ्स आपको यहां पे बायजूस के जब आप मॉक्स देंगे, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ वेदर यू क्लियर द कट ऑफ और नॉट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, कट ऑफ क्लियर हो रहा है क्या हमारा, ये जानना जरूरी है. ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है हमारी, वो जानना हमारे लिए जरूरी है. राइट, तो ये आप इस पे फोकस कीजिए, इज व्हाट माय एडवाइस विल बी. राइट गाइस, चलिए. सर, माय लीगल एंड जीके सेक्शन इज गुड बट इन अदर 3 सेक्शंस आई सफर अ लॉट, शुड आई ड्रॉप आउट दिस ईयर? अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना. सचिन तेंदुलकर बोलता है कि यार मेरे को इन स्विंग बॉल पे प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ दूंगा, अगले साल मेहनत करके आऊंगा फिर खेलूंगा इन स्विंग. ऐसे थोड़ी होता है. खेलते खेलते अपने आप सीखते हो यार. राइट, तो यही है, मेहनत करते रहो यार. हार मत मानो. हार क्यों मान रहे हो? अगर मैं आपकी जगह होता, मैं 0 से स्टार्ट करता यार. अभी 0 से स्टार्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता. डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग दैट इज कमिंग योर वे. ठीक है, स्कोर्स को देख के घबराओ मत. ठीक है, 2 सब्जेक्ट ही है, टाइम लगेगा. ठीक है, अब भी टाइम है हमारे पास, वर्क करते हैं, पूरा एफर्ट देते हैं. नहीं हुआ तब की तब देखेंगे, अब भी पूरा एफर्ट देना है हमारा, वो हमारे हाथ में है. डू दिस. राइट, कट ऑफ बेटा, कट ऑफ वो होती है कि आपका जैसे एग्जाम में कट ऑफ होता है कि हमारी तरफ से हम आपके एक कट ऑफ दिखाते हैं कि अगर आपके 150 में से 105 नंबर आए तो मतलब आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है. अगर आपके 75 नंबर आए, आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है. ये कट ऑफ वेरी करती है एग्जाम टू एग्जाम, हर मॉक में वेरी करती रहती है. राइट, बिकॉज एवरी मॉक डिफिकल्टी लेवल इज डिफरेंट, है ना. कभी इजी होगा, कभी टफ होगा, अलग अलग होगा, तो कट ऑफ चेंज होती रहती है. हाउ टू एनहेंस आर रीडिंग स्पीड? बेटा, व्हेन यू आर रीडिंग, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी एडिटोरियल आर्टिकल कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपके सामने जब एडिटोरियल है, जब न्यूज़पेपर है, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, हैव अ वॉच ऑन यू. एक टाइम आपके पास लगातार होना चाहिए कि आप टाइम देख रहे हो लगातार कि भाई कितना टाइम लगा मुझे, हाउ मच टाइम डिड इट टेक मी टू रीड द एंटायर पैसेज. राइट, पूरा पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगा. एंड इट इज नॉट जस्ट मियरली अबाउट रीडिंग. पढ़ने के बाद राइट इट डाउन कि क्या क्या रिटेन कर पाए आप, क्या समझ में आया, वॉट एवर यू रेड, उसमें से क्या समझ में आया, वो भी आपको यहां पे लिखना है. ठीक है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, वी कंडक्टेड अ सेशन ऑन द सेम, डू चेक इट आउट एज वेल.
और सिंपल है, आप आइडेंटिफाई कीजिए जब आप एनालाइज कर रहे हो मॉक को, मॉक दे दिया, वेयर डिड यू गो रॉन्ग, कौन से क्वेश्चंस में आपने तुक्के लगाए, वो तुक्के कैसे सही हुए, राइट, वहां से आपने क्या सीखा, मिस्टेक्स कितनी करी आपने, वो सबसे जरूरी है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड एंड वर्क ऑन दोस मिस्टेक्स, राइट, ये करना है आपको। एनालाइज योर मॉक्स, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड देन नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम, राइट, ये करना है जी आपको, ठीक है। व्हाट मार्क्स टू एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट फ्यू मॉक्स, मार्क्स की चिंता मत कीजिए आप, कट ऑफ्स, क्लियर द कट ऑफ्स, राइट, इनिशियली देखिए आप कितना दूर है कट ऑफ से, क्या रैंक आ रही है आपकी, ये देखिए, इस पे फोकस कीजिए। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मार्क्स एनीवेयर, हैव आई, मार्क्स की बात कभी नहीं करी एक्सेप्ट for how to increase your marks, right? I've shared this with you, but marks पे focus मेरा नहीं है, आप ही लोगों का है, मेरा focus है cut offs पे, my focus is on ranks. If you're working on a cut offs and ranks, you are pretty much sorted, right? चलिए भैया, मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं, कोई बात नहीं, मैंने ये ट्रिक्स बताई है, इसको आप फॉलो कीजिए, 2 महीने में ही आपका एकदम चेंज हो जाएगा सीन। There's some technical issue. I'm unable to download CLAT Ignite magazine. Guys, कल नवंबर की CLAT Ignite magazine भी आ रही है, so make sure you do download the same. ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, है ना, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर से ये मत पूछो कि गाते कैसे हैं, है ना ठीक है, चलिए वो आप यहां से पूछिए, ठीक है, लता मंगेशकर से पूछिए। ऑलराइट, ओके, सो वेरी गुड गाइस। नाउ गाइस, अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी की तैयारी करें, कल करें, परसों करें, कल से शुरू करते हैं सर, मंडे से शुरू करेंगे, सुबह पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, अभी खेलते हैं, अभी पबजी खेलते हैं, अभी ये करते हैं, वो करते हैं। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, डू दिस नाउ। ईच ईयर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स with scores of 60% crack CLAT, right? 60% in their 12th and they end up cracking CLAT, right? Students with a score of 95% also crack CLAT, right? But there are also instances where students securing 95%, 98% don't crack CLAT. There are also instances students securing 70%, 75% not cracking CLAT. So, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, your school studies are totally different from your entrance exam studies, right? Studying for entrance exams and studying for your school preparations is totally different, right? तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार बाद में करेंगे, later we'll do it later, because आपने सुना होगा कि भाई लेटर जब भी हम किसी चीज को स्नूज पे डालते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू, राइट? अलार्म सुबह उठे स्नूज पे डाल दिया, नेवर एवर डू दिस, राइट? मेक श्योर वी आर डूइंग थिंग्स राइट नाउ, राइट अवे, राइट? अभी इमीडिएटली हम चीजें कर रहे हैं। Guys, our aim is to simply, be a better version of ourselves after each mock, right? What should be our aim, right? Aim should be to learn from each test or mock. सबसे पहले, to learn from each test or mock, we should learn, right? Second, to identify mistakes, right? To identify our mistakes, right? Very important this is. We should identify our mistakes, right? Third, the most important point here, guys, our aim is to clear the cutoffs of the mocks. ठीक है, आपको पता है बायजूस एग्जाम प्रेप पे जो भी मॉक्स आते हैं उस पे हम आपको कट ऑफ देते हैं, तो वो कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है, ठीक है जी? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट? आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो भी मॉक टेस्ट देते रहना है आपको। मॉक टेस्ट सबसे अच्छा सोर्स है रिवीजन का, सो डू राइट दिस डाउन एज वेल, अपना मेंटल नोट बना लीजिए। मॉक्स आर द बेस्ट टूल फॉर studying all subjects in a span of 2 hours. Please pardon me for my handwriting. In a span of 2 hours. 2 घंटे के अंदर अंदर आप 5 सेक्शंस कर लेते हैं मॉक्स में, तो मॉक्स से अच्छा टूल हो ही क्या सकता है दोस्तों, राइट? सो मॉक्स, जितने ज्यादा आप मॉक्स दें उतना ज्यादा बेहतर, राइट?
चलिए सर, अभी मुझे बोर्ड्स पर है क्लैट ज्यादा, क्या बोर्ड या क्लैट किस पे ज्यादा फोकस करूं? क्लैट। Sir, is it late if I start preparing for CLAT 2022 from now? बेटा you can start right now, right? But आप कल की तरफ मत देखिए, आपने आज ये क्वेश्चन पूछा है तो आज से अभी से ही ये स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। और अभी तक ये वीडियो बैठ के देख रहे हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई किसका इंतजार है? जल्दी से हिट द लाइक बटन गाइस, कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा ये वीडियो, राइट? बिल्कुल मैं आपका इंतजार करूंगा आपके सारे कमेंट्स का। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वीडियो कैसे आपको मिलेंगे, कैसे सारे के सारे अच्छे जबरदस्त पावरफुल वीडियोस, राइट? लवली गणेश सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन गाइडेंस, इट्स अ रियली नीडेड सेशन। क्या बात है? तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, and also hit the subscribe button as well. Guys, if you're preparing for CLAT 2023, we have a dedicated batch for the same, batch 7 free trial चल रही है दोस्तों इस बैच की। Here conceptual clarity from scratch, ACE mentors will help you till the date of your exam, hundreds of tests, जो भी चीजें आपको चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज जो मैं बोल रहा था वो सब चीजें आपको यहाँ पे इस बैच में मिल रही हैं गाइस। इसी के साथ there is also batch for 2022 aspirants। अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, there are two batches, bilingual also, there's a batch in English language। तो दोनों batches की free trial चल रही है। And also I've shared this with you that only if you're preparing for CLAT 2022 and only want to prepare for legal and current affairs, there's a dedicated batch for the same। तो बहुत सारे batch है, आपको पता है दोस्तों। शुरू करना है हमें अभी से, कॉल कीजिए इन नंबर पे जल्दी से जल्दी, ताकि आप सारी क्लासेस शुरू से आप जो है अटेंड कर सकें। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेल कर सकते हैं हमें, या फिर आप कमेंट्स में मुझे पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स, राइट? तो आप देख सकते हैं CLAT 2022 बायलिंगुअल बैच, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस रहेंगी, और इंग्लिश ओनली बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। तो बैच 5 फ्री ट्रायल दोनों बैचेस की चल रही है, right guys? So with this we are done for the day. Thank you so much for your time. We will meet again in the next session. Till then, take care, goodbye, have a good time ahead, bye bye. Thank you everyone, thank you so much, bye bye.